So let's do problem number 10 of exercise 13.4. Find the mean number of heads in 3 tosses of a fair coin. So यहाँ पे हमें मीन फाइंड आउट करने को बोला गया है और मीन फाइंड आउट करने के लिए हमारा इक्वेशन होता है, मीन को कैसे लिखा जाता है, इट इज टू बी डिनोटेड विथ बाय म्यू, और आप इसको e ऑफ x भी बोल सकते हो, दैट इज नोन एज एक्सपेक्टेशन ऑफ x। और इसका इक्वेशन जो होता है वो है समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n xi into pi। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, इवेंट क्या है हमारी, 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। एक कॉइन है उसको 3 टाइम्स उछाला गया है, एंड मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरा जो सैंपल स्पेस है दैट विल बी 2 raised to 3 is equals to 8। So I have mentioned the sample spaces over here. Again as I told you, हमने जो पहले पढ़ाया था उसी तरह से कि आपको अगर 8 की सीक्वेंस बनानी है, so 4h 4t 2h 2t and then after alternate ht ht, right? तो इस तरह से आप इजीली अपना सैंपल स्पेस जल्दी से क्रिएट कर सकते हो and without any missing term, right? So this is my sample space. Now I'll mention that what is x. So x is number of heads. तो यहाँ पे let us calculate how many number of heads are appearing. So over here there are 3 heads. यहाँ पे 2 है, 2 1 2 1 1 and 0, right? So I can say that x can take value of 0 1 2 और 3, इनमें से कोई भी वैल्यू x की पॉसिबल है। So I am writing the same thing in my PD table, okay? So 0 1 2 and 3. Now it's time to find out the probability for each one, okay? तो x 0 कितने टाइम्स हो रहा है यहाँ पे, so you can see that only one possible combination triple t वाला है वो, so I can write it over here, it is 1 by 8, right? 8 है, total outcomes है, so probability will be 1 by 8. Then x equals to 1, so you can see that यहाँ पे 8 1 2 and 3, so it is 3 by 8, so यहाँ पे हमने लिख दिया 3 by 8, and then after x is equals to 2, how many times, so 1 2 and 3, so I'll write it over here 3 by 8, and the last one is x equals to 3, so only 1, so यहाँ पे लिखेंगे हम 1 by 8, right? So we have, आपको इसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे, you add all this, so 1 plus 3 4 4 plus 3 7 7 plus 1 is 8, 8 by 8 हो गया 1, that means मैंने अभी तक का जो किया है वो सब सही है, right? Now it's time to find out the mean. So mean is like mu, and that is equals to summation of i equals to 1 to n xi into pi. So first of all हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, xi क्या है, x of 1 बोल दो तो उसकी वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है, so I will write that 0 into उसका रिलेटेड pi क्या है, it is 1 by 8, so it is 1 by 8, right? Plus then after 1 into 3 by 8, 1 into 3 by 8 plus 2 into 3 by 8, so it is 2 into 3 by 8, and then after it is 3 into 1 by 8, हो गया? देखो इसमें अगर डिनोमिनेटर सेम है सबका तो हम इनिशियली उसको कैंसिल नहीं करेंगे, इट विल हेल्प अस इन एडिंग द न्यूमरेटर्स, ओके? तो यहाँ पे कैंसिल नहीं करना है, 2 और 8 को आप कैंसिल नहीं करोगे, राइट? ओके, सो 0, ये पूरी टर्म 0 गई, वो हम नहीं लिख रहे हैं, 3 by 8 plus 3 into 2 6 by 8 plus 3 by 8, right? So 6 plus 3 9, 9 plus 3 12, it is 12 by 8. Now you can cancel it, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 3 by 2, so that is your answer for me, okay? ये हो गया आपका आंसर, okay? न्यू, ठीक है? थैंक यू।